रहमान रहीम। आप सब लोगों के आने का बड़ा शुक्रिया। आज जैसे आप देख रहे हैं कि ये कवान का सफ़र की अगला मरला है, जिसमें यहाँ से इंशाल्लाह कवान को हम एयरपोर्ट लेके जाएंगे। अभी ये शिफ्ट हो रहा है इनटू दी अदर कंटेनर, जो कि ट्रैवलिंग कंटेनर है इसका, और वहाँ से क्रेन के ज़रिए इसको डाला जाएगा ऑन टू दी कंटेनर व्हीकल, और फिर वो इसको लेके जाएगी एयरपोर्ट। और इंशाल्लाह वहाँ पर एक रशिया का वो C-130 प्लेन है, जो कि इसको 6 घंटे में इंशाल्लाह कम्बोडिया पहुँचा देगा। कम्बोडिया के अंदर इसकी पूरी रिसेप्शन कमेटी वहाँ पर जो है वो तैयार है, और वो जो सेंचुरी है जहाँ पर ये जा रहा है वो 25,000 एकड़ के ऊपर मुहित है। उसके लिए इसका स्पेशल 10 एकड़ का एक इनिशियल जगह बनाई गई है कवान के लिए, और उसकी तस्वीर उन्होंने आज सुबह भेजी हैं। वो अभी आपके साथ मीडिया पे हम शेयर भी कर लेंगे। उस जगह की खासियत ये है कि वहाँ पर कवान भी फिर सकेगा। 10 एकड़ की काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बॉर्डर पे सारे जो है वो और हाथी हैं, वहाँ पे सेंचुरी है वो, तो उसको बाकी हाथी नज़र भी आएंगे। तो जो इसकी जो आइसोलेशन का इशू था, और जिसकी वजह से ये शिफ्ट भी हो रहा है कि ये एक हर्ड एनिमल होता है, और हर्ड एनिमल को अपने और हाथी चाहिए होते हैं रहने के लिए, तो वहाँ पर उसको वो हाथियों को देख सकेगा। आप जब तस्वीर देखेंगे तो आपके सामने वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह कवान का सफ़र है आज का। इसके लिए हुकूमत ने सारी फैसिलिटीज़ फराम की हैं, IWMB से लेके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जो रिक्वायरमेंट्स थी सब पूरी की गई हैं। जो फ़्लाइट की रिक्वायरमेंट्स थी वो तमाम पूरी की गई हैं, ताकि कवान जिसने इतनी खुशियाँ बिखेरी हैं इस्लामाबाद में लोगों के लिए। और मुझे अभी फैसल बता रहे थे कि जब ये छोटे होते थे तो तब ये यहाँ आते थे, उस वक्त भी कवान खुशियाँ बखेर रहा था। तो इतने साल 35 साल कवान ने हमें खुशियाँ दी हैं, तो अब हम खुशी के साथ कवान को यहाँ से रुखसत कर रहे हैं, ताकि ये जाकर अपने अगले जो साल रह गए हैं रिटायरमेंट के, वो अपने और हाथियों के साथ एक अच्छी जगह पे, जो कि सेंचुरी है जहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टोटली उन्होंने ली है, वहाँ पर जाकर ये गुजार सके। और इस जगह के मुतालिक मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये इस्लामाबाद के लोगों का असासा है। ये बहुत खूबसूरत एक नेचुरल असासा है, और इसको इंशाल्लाह हम एक ओपन एनक्लोजर ज़ू कम सेंचुरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और कवान के जाने के बाद यहाँ पर इसकी रिफर्बिशमेंट और इसका पूरा एक प्रोसेस होगा, आप देखेंगे। और इस्लामाबाद के लोगों के लिए यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास इंशाल्लाह फैसिलिटी बनाई जाएगी। और ये हमारी हुकूमत का, इमरान खान साहब की हुकूमत का इस्लामाबाद के लोगों को एक तोहफ़ा होगा, जहाँ पर वो एक ओपन इनक्लोजर ज़ू में जानवरों को, इंडिजिनस जानवरों को देख सकेंगे, जो कि पाकिस्तान के अपने जानवर हैं। और जानवर भी जहाँ पे खुश होंगे और देखने वाले भी खुश होंगे। तो इंशाल्लाह इस के साथ ये अब आप बाकी प्रोसेस देख सकते हैं। अब मैं फैसल कुछ बात करना चाहते थे तो उनको I just want to speak in English for our foreign correspondents that Kawan is all set for his journey to Cambodia. We've already got in touch with the sanctuary in Cambodia. They have sent us some pictures about his new abode, and in Pakistan we would all like to wish him well for his new journey. And we would like to say that although we are very sad to see him go, we think it is the right decision to let him go at this stage and to retire him after 37 years of giving happiness and joy to the people of Pakistan, especially the children of Islamabad. And I think in his future house or his future home in Cambodia, he will be very happy, because he's got a 10-acre area in which he will be relocated immediately, which has been fenced at the moment. But across the fence he can see other animals, other elephants. So you know the herd mentality of the elephant, which is very important, because they like to live in herds, they like to be with their own. That is why he's been shifted to Cambodia. And I think this is something that we will be happy to see Kawan happy in Cambodia. With this, I would like to thank the foreign correspondents, and I would just also like to state that the place where we are standing, we're going to shift over this cage zoo into an open enclosure zoo with indigenous animals. That is what is required, that the animals which are indigenous to Pakistan should be here, and it should be an open enclosure zoo so that the animals can be free in their environment, and we can also see them in that environment. And also we are also doing
an expansion of our protected areas. We have started a protected area initiative, and our Prime Minister is traveling in 2 days to the north of Pakistan, where we are going to announce 2 very huge national parks covering almost about 4,000 square kilometers, the Himalaya National Park and the Nanga Parbat National Park. Idea of that whole initiative is to see wildlife thrive in their own habitats. We are going to protect the habitats, which is going to protect our wildlife, which includes the snow leopard, the markhor, the ibex, the Himalayan brown bears. All of them will be there, and we will promote ecotourism for us to go there and see the animals in their own habitats and see them happy. Thank you very much. یہ انشاءاللہ اس کا بھی پورا پلان بن رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے جلد پیش کریں گے اور اس کا PC1 جب جس طرح ہی کمپلیٹ ہوگا ہم پورا میڈیا کے سامنے رکھیں گے. Indeed a very emotional moment, and we say sorry and farewell to Kavan. Sorry why? Because we couldn't really take care of him. Our predecessors didn't do anything in this regard, but hats off to the new government. They have taken some initiatives, as Minister was just explaining, that new national parks are being built. But we are also sorry because it's an emotional moment. We've been coming here for past many years, and Kavan is in our memories from our childhood, and today he's leaving. And then I remember his girlfriend Saheli. She was also here. We all remember her as well. She died many years ago, and ever since then he has been all alone. So it's good that what you have done, and I've seen those pictures where he's going to a better place. But in the meantime, we really need to work on our national parks and everything, and this government has taken some initiatives in doing that. بہت ہی ایک ایموشنل لمحات ہیں آج, کیونکہ اس کے ساتھ یادیں پرانی ہیں, خاص طور پہ جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں اور ارد گرد, وہ آتے رہے, اس کو دیکھتے رہے, ملتے رہے. ہم دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں اس کو. 35-37 سال سے یہ یہاں پہ ہے. ہم اس سے معذرت بھی چاہتے ہیں. ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا ہے, صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا ہے, اور آج ہم اس کا فیئرویل یہاں اٹینڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عامر خاص طور پہ ڈیزرو کرتے ہیں. ڈاکٹر عامر جتنی انہوں نے محنت کی ہے, اور ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں انسانوں کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن ان کا, یہ جو بے زبان جانور ہیں جو بول نہیں سکتے, آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, ان کا خیال رکھنا. اور دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو ہمیں تو بڑی شرم آ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے. لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے, عمران خان صاحب نے پہلی بار بات کی ہے انوائرمنٹ کی, نیشنل پارکس کی, ان پہ انیشیٹیوز لیے ہیں. ملک صاحب ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے بریلینٹ کام کیا پہلے خیبر پختونخوا میں, آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے, اور بہت زیادہ نیشنل پارک جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں. اور 2 کا جس طرح سے ملک صاحب نے کہا کہ 2 دن کے بعد پرائم منسٹر جا رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں پہلے کر دینی چاہیے تھی, لیکن بہرحال اب ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی میں ہم معذرت بھی چاہتے ہیں کوان سے, اور ہم اس کا کیئر نہیں کر سکے, اور الوداع بھی کہہ رہے ہیں. اور جن نے اس نیک کام میں حصہ ڈالا ہے ان سب کو خراج تحسین. انٹرنیشنل کچھ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ میڈیا کے دوست ہیں, کچھ سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے پوری طرح سے اس کیمپین کو چلایا ہے. شعر جو ہیں سنگر, انہوں نے کافی زیادہ محنت کی ہے. سب کو خراج تحسین. اور سب سے بڑھ کے منسٹری آف انوائرمنٹ نے یہ سمجھا, اس چیز کا احساس کیا, اور پوری طرح سے انہوں نے تعاون کیا ہے. اور ہم اپنی کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ہائی کورٹ کا, جنہوں نے زبردست فیصلہ اس حوالے سے دیا تھا. اور آج وہ دن آ گیا کہ کاوان جو ہے ایک بہتر جگہ پہ جا رہا ہے. پہلے ڈاکٹر عامر بات کر لیں, پھر سوال کر لیتے ہیں. ڈاکٹر. Good day. I know it is emotional day for all of us, but I think also we call it D-Day. It is the day where Kavan is going to be retired after all his service, as His Excellency mentioned. On behalf of Forbos and the team of Forbos, at first I want to thank all of you for the hospitality what we get in the last 3 months is here, for all the support. Kavan is going today because Pakistani people raise the attention about this. It's not done by foreigner, it's done by Pakistani people. People what understood that this elephant needs changes. And due to this effort by Pakistani people, we are here to help and to support. So we are really very glad today
that we are able to move Kavan to Cambodia, where we'll have, I will say, a bigger place, where we'll have other places where he could be an elephant. So all what we wish is not to say it's in Pakistan or in Cambodia, but there he will be with other elephant. He will be with other Asiatic female elephant. He will have finally a family after all these years. I want to thank really also the persons who done this. I want to thank the Army of Pakistan who make big effort to bring the truck and the winch. I want to thank the Ministry of Climate Change who really facilitate all the needed documents and support and logistics. Thanks to DHL who care for us to support on us. And National Logistics Center, NLCD. I want to thank our partner, Free the Wild, who really helped us. I want to thank also Mr. Eric Margulies, which without him will not be able to have this aeroplane and to bring the elephant all this distance. So I want to thank Eric Margulies Foundation. It's American businessman who donated the aeroplane. I want to thank all the volunteers here. So really I can, without non-stop, I can say thank you. All what you show, you set example to all the world. Started a case in the United States. What you done here, you give a lesson to many nations worldwide, United States, United Kingdom, where they start a case to also to release their elephant to a better place. So I want to say thank you, Pakistan, to set a model for humanity and for animal welfare and taking the correct action. Thank you once more for all of you, and thank once more to the ministry. रायना किसी और ने बात करनी? Is still sedated, so now we chained him and roped him, and we will move him backwards into the crate for transportation. Yeah, but he's still sedated. Otherwise, it wouldn't be possible. So that we can achieve this in a safe manner for the people and for Kavan, it's a combination of training, which was done before here, good teamwork, good management here with the elephant, and a little bit help of medication. So we are still busy. I guess in half an hour, 1 hour, he is loaded. He's safely secured in the transport cage. And then he will be loaded to the big truck, and then we go to the airport. So, जी बताएं जी.